Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide systematic and quality guidance on history optional as well as daily current affairs analysis. Now, this is the first video of this channel and I wanted to start with something that is very foundational, right? That forms the basis of all the future topics that we are going to read. Now, this is also the first topic of the syllabus of paper 1, and that is sources of history. See, it's very important to know about sources of history and the various types of sources, because for example, when I teach the Harappan civilization or the Vedic period or maybe the Mauryan Empire, and I refer to certain inscriptions, to maybe certain seals or to maybe certain texts, you should know that how these inscriptions actually help in understanding and recreating our idea of the past, right? So let us begin with the first topic, that is sources of history. Now, each topic basically has some broad subdivisions which you need to keep in mind in order to understand the topic best. So when I talk about this topic, that is sources of history, first we have to understand about the types of sources. What are the various types of sources? Then we have to understand about what are archaeological sources, what are literary sources, and what are foreign accounts, right? Now, if you see the PYQs, just to give you an understanding of how UPSC asks questions from this topic, I have included few PYQs. For example, if you see the first PYQ, it says about, do you agree that archaeological evidence often helps in better understanding of literary sources? So what we see over here is there is a comparison that is being asked about between archaeological sources as well as literary sources. Next focuses on foreign accounts as a source of ancient Indian history, right? So it talks about foreign accounts, that is part of literary sources. Then again, the question is about Puranas, where the innovative genre of literature. Again, the question is basically about literary sources. So as we can see from these questions, the main focus is what? The main focus is on your core understanding. Whether you understand what these sources are, what are archaeological sources, what are literary sources, and what exactly are their merits and how they are used as a source of history, and what are basically the limitations and the comparisons. So that is exactly what we are going to follow in this particular video, right? So let us begin with the sources of history. Now, when I talk about sources of history, what exactly do we mean by sources of history? See, anything basically can be a source of history. That is, for example, if this particular nail polish that I'm wearing, this can be a source of history. How it can be a source of history? For example, the chemical composition of this particular nail polish, right? That gives us an idea. For example, 200 years from now, when archaeologists maybe study this, then this is an artifact. Artifact is anything material that is made or altered basically by human hands, right? So they will come to know about the standard of beauty that was there in this period, the kind of chemical composition that was there, the safety standards that was there. For example, because nail polish, even though the nails are dead skin cells, but then still the nail polish and all that we wear, it basically gets absorbed, right, in the skin. So safety standards that is there. So those kind of things. So here what I have included is anything that is used by historians to study and interpret the past is basically a source of history. Now, it can be any tangible material, right? For example, a nail polish. It can be a written record, for example, a palm leaf, a manuscript, and so on. It can be oral source, for example, the stories that you hear. For example, my maternal grandmother, she used to tell me stories about, the Britishers and how the Babus used to come. They used to refer to them as Sahib and Babus, and how they used to come, and what are the things that they used to do and all that. So that also is a kind of source of history. That is the oral sources. Also, for example, we have folk songs. That is also a source of history that tells us, for example, there are folk songs. Let us assume रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी जो कि झांसी वाली रानी थी, ठीक है, इस तरीके से the if I have just forgive me, okay, if I have one or two lines I have skipped here and there, but okay. So folk songs are there. Then we also have some that give us an idea of what? That give us an idea about the society, the economy, the culture, how they used to look at the idea of bravery, the role of women that was there in the society. All of these things, if you dissect these folk songs, if you, for example, look at paintings, the Ajanta Ellora cave paintings, you will understand the various layers that are there. What people used to think about religion, how they used to perceive that, the Buddha, the statues of Buddha, how they used to perceive
a spiritual guru, how the spiritual guru should look like, the definition of, and how sometimes it is more masculine, sometimes more focus is there on spirituality. When we do about Gandhar, Mathura and Amravati School of Art, we are going to read about all of these, right? So they are also a source of history. Even videos can be a source of history. Maybe not for ancient Indian history, but let us assume if we talk about modern Indian history, the first documentaries, the movies of Charlie Chaplin, they also give a lot of idea about the period in which they were created, right? So even videos are a source of history. Basically anything around you is a source of history, right? So literally anything and everything can be a source of history. Now what are the various types? Now broadly, sources of history are divided into two types, right? We have primary sources and we have secondary sources. Okay, now do not bother to basically take screenshots or to write each of these, whatever I'm saying. All this whatever notes I'm referring to here are my own notes, and I'm going to like upload this on my Telegram channel, which goes by the same name, okay? That is Rooted by Jyoti Upadhyay, and maybe I'll provide the link in the description as well. So go to the channel, PDF will be uploaded over there. Coming back, so we have two types of sources, that is primary sources and secondary sources. You know what are primary sources? Primary sources basically are the sources that are created during the time of the event in which they are talking about. For example, let us assume that we have a pillar of Ashoka and there is something written on that particular pillar. Now Ashoka, let us assume it's pillar number 13, right, where he mentions about the Kalinga War. So this Kalinga War took place during the reign of Ashoka, and the pillar that talks about this Kalinga War, that was also inscribed during the reign of Ashoka. So that becomes a primary source. But let us assume there is some Chinese traveler who visits after a few centuries, or even after the death of Ashoka, or after this Kalinga War has happened, and what he does is he reads this pillar, he reads the inscription on the pillar, and then whatever he has interpreted out of it, he writes it down. Then that becomes a secondary source, right? For better understanding, I have included this. Let us assume the book of Upinder Singh, that forms a very important book for our understanding of ancient Indian history. And yes, one more thing is, I am going to provide a page by page summary or the important things that are there to understand from Upinder Singh's book on this channel itself, okay? So keep following for that as well. And that I have decided to do after a lot of mental preparation myself, because it's a bulky book, but then definitely I'm going to do that and upload it here, okay? And you must go through that. And I'm not saying it's just because of my video, but then that book is a mine of information, and at times you will find even there are lines that have been picked up from that book, and as it is, they have been given in quotes in the paper in the examination hall, right? So you cannot miss the book. So now this book of Upinder Singh, okay? Then also maybe the books of Romila Thapar, the books of R.S. Sharma that we read, not the school books, okay? The main books that they have written, these books are also secondary sources, right? Why? Because see, the main difference between a secondary source and a tertiary source is that tertiary source does not give any own interpretation. For example, school textbooks, there are authors who write school textbooks, but they do not give their own interpretation of what they have read. What basically they do is they compile information that they have read, maybe from primary or from secondary sources. But secondary sources are the ones that read the primary sources and give their own interpretation of that, right? So this is primary and secondary sources. And the first historical book of India, that is a book that follows all the layers that a history book should be about. See, any book is not a history book. History book means the book has to follow a certain pattern. It has to be unbiased. It has to mention the sources that it is using in order to write the information, whatever the author is writing. So, and there are also several other criteria that we are going to do when we do historiography. So here, the first history book that we consider to be in Indian history is Raj Tarangini of Kalham. Just remember this factual information, right? So we are saying about primary and secondary sources, that are two broad divisions. And also I told you about the tertiary sources. Now, history as a subject based on sources, history as a subject is divided into three groups, right? First is prehistoric period, proto-historic period, and the historic period. What happens is,
Prehistoric period is basically a time where we do not find any literary material. What is literary material? That is written literature. See, what happens is, as humans, gradually when we evolved, we also had our cognitive development. What happens is, first we learn to speak. First is in terms of gestures, then in terms of orally we learn to speak, and then we move on to writing. So the period from which from which humans learn to write, that shows a very advanced level of cognitive development. And that's why the period from which they started writing and written sources are available, that period is known as the historic period. And the period before that is known as the prehistoric period. But then there is also a period where we have found written information, but we have not been able to read that written information, right? So it's a limitation from our side. For example, Harappan civilization, we have found seals of the Harappans on which there is some writing. We have also found some broad billboard kind of things on which also there have been large letters that have been written. Usually it is said that the Harappan script is a pictographic script. Okay, it uses basically pictures. Let us assume what I mean by pictographic is just like the Egyptian script. If I have to say I saw and apple, right? So they will make a picture of an eye, right? Then they will say I saw, and saw is like saw, जैसे काटते हैं ना, saw, and then apple. This is just a basic example I'm giving you. So pictographic scripts are usually these kind of scripts. Okay, so Harappan script, as we know till now, it is a pictographic script, and almost 33% has been deciphered. It has not been made public. So because it has not been made public, and because we have not been able to decipher it completely, we cannot say it was prehistoric. We have also not been able to use the information and study them. So we also cannot use them and put them under historic category. So we have created a different category for such situations, and that category is known as proto-historic period, right? Now let us move on with proper divisions of how UPSC asks questions, right? That is about what are archaeological sources, literary sources, and so on. Now, archaeological sources, when we talk about what are archaeological sources? Archaeological sources are any tangible materials. Tangible means something that you can touch. Any tangible material remain of the past, right? Of the past, recovered through what? Either through excavation or through exploration. Now, what does excavation and exploration mean? Excavation is generally underground. Okay, when you dig underground, you excavate things. Exploration is more on the surface. You go and move around in different places, you roam to different places, you go and observe and see those artifacts, you see those pillars. That is basically exploration. Okay, at times it can even be by chance. For example, we had the discovery of the Harappan civilization. You know, there were some workers who were taking out bricks from a particular place, and this I guess it was Alexander Cunningham who was passing by, and he was like, what exactly are these people doing? From where are they getting the bricks? And then he went to the site, and then he saw and he thought that this might be a major discovery, or maybe it can be an important site. And then the site was sealed and it was excavated, and that pushed back the history of India by several centuries. Initially, before the excavation of this Harappan civilization, the Indian history used to begin from the Vedic period, right? So that is the importance of archaeology. See, archaeological sources, if you really want to understand the importance of archaeological sources, understand this, that had we not had any archaeological source, and we did not know how to read the archaeological sources, we would not be able to understand about the Harappan civilization. हमें पता ही नहीं चलता कि उसका हम interpret ही नहीं कर पाते. Whatever we know about the socio-economic category, the religion, the political structure of the Harappans is solely on the basis of the artifacts that have been found. So that is the importance of archaeological sources. It is said that archaeology is the backbone of historiography, or the backbone of basically writing history. Okay? So we will see about the merits as we move. So or even by chance, for example, we have क्या क्या आता है archaeological sources? What we have is, and what are the three main things that come under archaeology? It is basically, for example, we have the inscriptions, then we have monuments, we have numismatics. These are the three main things that come under archaeological
sources. There can be others also. For example, I told you paintings, I told you about these things, you know, for example, caves, we have seals and so on, pottery also, but the main things are these three. So moving on ahead, it is very important because it helps us to understand the culture of a group of people even if we do not have written evidence. For example, Harappan civilization, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया. Now what is culture? देखो बहुत सारे words होते हैं ना, we just use it randomly without understanding what exactly do they mean. So when I use the word culture, बहुत सारे लोग क्या है रैंडमली यूज करते हैं कि इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर. तो व्हाट इज कल्चर? दे हैव अ वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द वर्ड मीन्स. रैंडमली कुछ भी सुन लिया एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट. बट एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, as optional students, you need to know the meaning of these. So when I talk about culture, what I mean is every aspect of that particular person's life. For example, the food habit, for example, the way of thinking. Let us assume we say about Harappan culture, and if we compare it with the Vedic culture, that means these group of people, the Harappans, they had a certain type of thinking, they had a certain food habit जो से that was unique to them. ठीक है. For example, हम बोलते हैं साउथ के लोग बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, सो वी आर ईस्टर्न इंडिया. सो व्हाट डू आई मीन साउथ के लोग, what do I mean? That means I am referring to a group of people who follow certain common traditions, certain common food habits, certain way of dressing, certain way of thinking, certain way of building a house, certain way of building a pond, a river, a temple, and so on. So that is a collective identity. Okay? That is a culture. It includes all aspects of a person's life, including their way of thinking and doing things that they learn from the social groups of which they are a part of. ठीक है. तो culture develop कैसे होता है कि उनके जो generations wise these things are passed from one generation to another. Now side by side what I have also included two other words जिसका meaning हमें पता होना चाहिए. One is ethnography and the other one is ethnoarchaeology. Ethnography क्या है? Ethnography basically is the study of living cultures and communities. ठीक है. लिविंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो आज भी क्या है, आज भी अपने पुराने लाइफस्टाइल जो है उसी को लीड कर रहे हैं. ठीक है. ट्रेडिशनल जो उनका लाइफस्टाइल ओवर द जनरेशंस दैट हैव बीन पास्ड. सो व्हाट, और मे बी इवन वी हैव फॉर एग्जांपल इन दीज जॉर्वे ट्राइब जो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है. तो इसमें क्या है ना कि हम इनको, दीज आर काइंड ऑफ लिविंग एग्जाम्पल्स. सो दैट इज नोन एज, स्टडिंग देम इज नोन एज एथनोग्राफी. एंड व्हेन वी यूज them to understand their past, that is known as ethnoarchaeology. ठीक है. ये हो गया हमारे पास. Now let us move on to the three main branches of archaeology. So the three main branches of archaeology are inscriptions, coins and monuments. Now the study of inscriptions is known as epigraphy. The study of coins is known as numismatics. तो अब क्या है ना कि we will study each of them one by one. Now let us first look at inscriptions. So what exactly are inscriptions? Inscriptions मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे, ठीक है, ज़्यादा डोंट ओवर थिंक थिंग्स. किसी भी चीज़ पे अगर हम खुदाई करते हैं या एनग्रेव करके कुछ लिखते हैं तो वो क्या है, वो है इंस्क्रिप्शन. किसी भी चीज़ पे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी ऑन अ रॉक, इट कैन बी ऑन वुड, इट कैन बी ऑन अ मेटल, इट कैन बी ऑन अ टेराकोटा, एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे मटेरियल पे भी हो सकता है, आइवरी फॉर एग्जाम्पल, उस पर भी अगर कुछ एनग्रेव करके लिखा हुआ है, खुदाई करके लिखा हुआ है, देन दैट बिकम्स एन इंस्क्रिप्शन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर दैट इज स्टोन, वुड, आइवरी, मेटल एटसेट्रा. नाउ जस्ट टू गिव अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो कहाँ, वो कौन से हैं? दे आर बेसिकली द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द हरप्पन पीरियड. तो हरप्पन पीरियड में बड़े बड़े पिलर्स नहीं मिले हैं हमें. उसमें क्या मिला है, उसमें वी हैव फाउंड सर्टेन सील्स. तो उस सील्स में क्या है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, एनग्रेव किया हुआ है, ठीक है, खुदाई किया हुआ है, दैट इज देयर. देन फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो हैव सम बिल बोर्ड्स, जिसका मैंने रेफरेंस बताया. ऐसा भी हो सकता है मे बी कुछ पॉटरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो एन इंस्क्रिप्शन, राइट. And that's so they are the oldest inscriptions of the Indian subcontinent, and the oldest deciphered inscriptions that we have is basically the inscriptions in Brahmi and Kharoshri language, जो कि जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे these things will come and we will see their meaning.
सो ब्राह्मी एंड खरोष्टी लैंग्वेज, जो ब्राह्मी फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, खरोष्टी को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। खरोष्टी इज काइंड ऑफ लाइक उर्दू, यू नो, राइट टू लेफ्ट, एंड ब्राह्मी इज काइंड ऑफ जनरली हाउ वी राइट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से अशोका के कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, तो वो क्या है, दो चीज़ें होती है। ओके, अंडरस्टैंड दिस, देर इज समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज एंड देर इज समथिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेजेस फॉर एग्जाम्पल हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये क्या है, ये लैंग्वेज है। जिस तरीके से हम इसको पेपर पे लिखते हैं दैट इज द स्क्रिप्ट, जो लेटर्स हो गया, तरीका हो गया उनको लिखने का, कौन सा डायरेक्शन में लिख रहे हैं, दैट इज बेसिकली द स्क्रिप्ट। ओके, अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, दैट इज व्हाट मेक्स अ गुड स्टूडेंट हु, ये हमें ऐसा लग रहा होगा ना, यू माइट फील कि ये तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, क्या पता ये कभी यूज में आएगा कि नहीं, बट यू विल सी अ डिफरेंस as we progress with the videos. You will see a difference in the way, the more you understand these small nitty-gritties, the way you write your answers, they will also change, the way you perceive topics will also change. So you will gradually see a change in your thought and basically holistically your understanding of history. Okay, now let us move on with further, and the source of information of most of these things is basically I have taken Upinder Singh, then I am also a master's in history, and I have been a faculty of a very reputed institute on Eastern India. So I have experience and I have read the books. So be sure that you are in right hands. Okay, it's not like any random person coming and making videos. That has become kind of a trend on YouTube nowadays, and you know, I cannot kind of make entertain you because I am here to make you study. Okay, so if you feel कि ऐसे ना कुछ तड़कता भड़कता kind of thing I will do and catchy phrases I will use, so I hope I do not. ठीक है, so this is for serious students and let us do study seriously. So inscriptions as a source of history, right? So inscriptions as a source of history, that is how we use inscriptions. Understanding this will help you answer the first PYQ that I had written, that is that asks for comparison between archaeological and literary sources. So when I talk about inscriptions, inscriptions को हम history as a source कैसे use करते हैं? Inscriptions are ड्यूरेबल। ज़्यादातर जब हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं ना, तो हम पिलर्स पे लिखे हुए जो इंस्क्रिप्शंस है उसको हम रेफरेंस में लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर ड्यूरेबल, और क्योंकि क्या है ना कि ये चीज़ इंस्क्राइब किया हुआ है किसी चीज़ पे, अगर ये ईजिली इसको ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता। लेट अस अज्यूम कि एक बुक है, ठीक है, बुक भी क्या है, बुक भी अपने आप में एक टैंजिबल मटेरियल है, बट वाई डू आई पुट दिस बुक इन अ सेपरेट कैटेगरी दैट इज अ लिटरेरी सोर्स? दिस क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड कि बुक जो है वो भी तो टैंजिबल मटेरियल है, तो उसको हम क्यों आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रख रहे हैं, वाई कैन उसको हम क्यों लिटरेरी सोर्स में रख रहे हैं, वाई आर वी नॉट पुटिंग इट इन आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैटेगरी? द मेन रीजन इज कि उस बुक का हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। उस बुक का हिस्टोरिकल वैल्यू डज नॉट कम फ्रॉम द मटीरियल दैट इट इज मेड ऑफ और द मटीरियल ऑफ द बुक, इट कम्स फ्रॉम द राइटिंग्स दैट इज देयर इनसाइड द बुक। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट इन अ सेपरेट कैटेगरी दैट इज लिटरेरी सोर्सेज। लेकिन इसमें क्या है, व्हेन आई टॉक अबाउट इंस्क्रिप्शंस, ये किस पे है, लेट अस अज्यूम ये किसी पिलर पे हो गया, या किसी मेटल पे हो गया, किसी स्कल्पचर पे हो गया। आगे हम जैसे देखेंगे कुछ कुछ टेम्पल्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस चिदम्बरम में वी हैव सम टेम्पल्स, सो उसमें क्या देयर आर वेरियस स्कल्पचर्स, उसके नीचे कुछ कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है। सो इट्स काइंड ऑफ अ होलिस्टिक थिंग। उसका रेलेवेंस इज नॉट जस्ट ऑन दोज राइटिंग्स, इट्स अबाउट द मटीरियल, द होलिस्टिक मटीरियल, ठीक है। तो इससे हम इंस्क्रिप्शंस को एज अ सेपरेट कैटेगरी रख रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस बिकॉज द चेंजेस आर इजीली आइडेंटिफाइबल। फॉर एग्जाम्पल अशोका का कोई इंस्क्रिप्शन है, किसी रॉक पे लिखा हुआ है, उसको किसी ने जाकर के कुछ मिटा के अब दोबारा से इंस्क्राइब करने का कोशिश किया, तो क्या होगा, विल इट हैव द सेम फिनिशिंग? इट विल नॉट हैव। दिखेगा आराम से कि वो क्या है, वो चेंज करने की कोशिश की गई है। या फिर अगर कोई कुछ वर्ड वहाँ से मिटाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो इट्स ईजिली विजिबल, ठीक है। सो इट इज ड्यूरेबल एंड द चेंजेस एंड एडिशंस आर ईजिली visible, so it's very difficult to tamper with, unlike compared to these sources, ठीक है, compared to the literary sources. Now what happens is we are coming to the main thing कि importance of literary sources, importance of archaeological sources. तो archaeological sources क्या है ना, they are very important to understand political history. ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर जो पिलर्स होते हैं या ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होता है ना कि ये स्पॉन्सर कौन करता है, ये स्पॉन्सर करते हैं किंग्स। वी ऑल्सो हैव प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपना लैंड किसी को डोनेट किया,
दैट बिकम्स और दैट, एंड मैंने क्या किया, उसको किसी पत्थर पे खुदवा करके जिस लैंड पे मैंने डोनेट किया है उस लैंड के पास मैंने लगा दिया. That is also an inscription. So there are private inscriptions also, but most of the inscriptions that we are referring here are basically the inscriptions by the that is patronized by the rulers, right? So what happens is कि these, if the inscriptions have been patronized by the rulers, what they do is they are very valuable source of information on political history. And what I mean by political history is राजाओं के नाम जानने के लिए, या फिर व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो अपने किंगडम को किस तरीके से रूल करते थे, या फिर मे बी वो अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए क्या करते थे. लेट अस अज्यूम अशोका, उसने अपने आप को इंस्क्रिप्शंस में क्या रेफर किया है, एज देवनम पिया पिया दासी, दैट मीन्स बिलवड ऑफ द गॉड्स, राइट. सो ही यूज्ड टू जस्टिफाई हिज रूल by saying that see I am basically beloved of the gods, not I am God. बाद में हम देखेंगे there will be for example some Gupta rulers who will say that we are gods. He is saying I am beloved of God and that's why I am ruling over, and that's why I am ruling basically over the people. I am like a father to the people. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रहा है, अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है. ठीक है, फिर क्या है कि एज वी मूव फर्दर कि हमें जो लेटर इंस्क्रिप्शंस मिल रहा है उसमें क्या है, बहुत बार हमें ये राजा है, इसने ये पर्टिकुलर चीज़ किया था, इसके जो दादा थे उन्होंने ये किया था, उसके जो दादा थे उन्होंने ये किया था. इस तरीके से क्या है, हमें जेनोलॉजी जानने को मिलता है, दैट इज द डायनास्टिक लिस्ट ऑफ किंग्स हमें जानने को मिल रहा है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड. फॉर एग्जाम्पल एक राजा का पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स इवन कि कहाँ तक उस राजा का रूल जो था वो था. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि कोई इंस्क्रिप्शन है, हम अशोका के इंस्क्रिप्शन को मान लेते हैं अभी के फॉर रेफरेंस टू वॉट एवर वी आर गोइंग टू रीड फर्दर. तो अशोका के इंस्क्रिप्शन जहाँ जहाँ हमें मिले हैं ना, उससे हमें क्या पता चलता है कि अशोका का जो रूल है कम से कम वहाँ तक तो रहा ही होगा, राइट. सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द किंग. Next, it provides some factual details, like for example we have dates, we have fiscal terms, कि वो अपने जो उनके जो रेवेन्यू सिस्टम है, उन रेवेन्यू सिस्टम में उनके टैक्सेस का क्या टर्म था, क्या यूज़ करते थे, या फिर उन टर्म्स का क्या मीनिंग था, वो भी हमें बहुत बार पता चलता है उससे. कुछ वो अपने सोल्जर्स को क्या पे करते थे, व्हाट वाज द अमाउंट दैट वाज पेड, और मे बी व्हाट वाज द बेसिकली व्हाट वाज इट अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और वाज इट अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हमें ये सब चीज़ें भी पता चलती हैं इंस्क्रिप्शन से. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मैंने बता दिया. Then we also political structures, administrative units, revenue systems. These are some information that we come to know. Now, apart from providing political information, the inscriptions also provide us information about the society. For example, here we have two inscriptions. That is Uttara Merur inscription, and we also have inscription of Chola king Raja III. तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, इसके ऊपर प्रीलिम्स क्वेश्चन भी आ चुका है. उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन ये है ना, जो हमें लोकल गवर्नेंस जो एग्जिस्ट करता था चोला पीरियड के टाइम पे, उसके बारे में मेंशन करता है. इट मेंशंस अबाउट द असेंबलीज. देन फॉर एग्जांपल ये राजा III के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन बना था, उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट लेबर, कि किस तरीके से क्या है ना कि लेबर प्रोवाइड कर, लोगों को किस तरीके से पेजेंट्स को बोला जा रहा है कि आपको ये फिक्स लेबर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा इवन इफ द पेजेंट्स आर नॉट लाइकिंग इट. तो इस तरीके से क्या है कि एक असेंबली बुलाते हैं वो, और वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टैक्सेस, सो वी नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेजेंट्स, वी नो अबाउट द ग्रीवांसेस ऑफ द पेजेंट्स, व्हाट वाज द एटीट्यूड of the ruling class towards the grievances of the peasants. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सोसाइटी के एस्पेक्ट में आ गया, रेवेन्यू सिस्टम वगैरह हमारे इकोनॉमी के एस्पेक्ट में आ गया. सो दीज इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो हेल्प गिव अस सोशल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, राइट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज they also provide history of religious sects. Yes, for example, there were some caves that were donated by Ashoka to the Ajivikas. Who were the Ajivikas? As we do about the Protestant religious faiths of 6th century BC, we are going to read about them. Okay, so बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब के बारे में क्या है, बहुत सारे केव्स में जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्राइब किया हुआ है, उन सब से हमें क्या पता चलता है, इनके बारे में पता चलता है, राइट. So basically inscriptions they also provide information about religious sects, especially the dateable donative records. Yes, अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ डोनेट किया, प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस. यूजुअली द प्राइवेट डोनेशंस यूज टू गो टू द टेम्पल और टू अ ब्राह्मण. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि when I am donating this, what I do is कि I write generally कि my name and I am donating this particular piece of land or this much amount of money to this particular temple or this particular priest in this particular time. तो जो हमें क्या पता चलता है कि उस particular time में कौन सा religion जो है वो सबसे ज़्यादा
पॉपुलर था लोगों के बीच में, या हो सकता है कि कौन से उस टाइम पे ब्राह्मण्स का पोजीशन क्या था, लोग किसको डोनेशन कर रहे हैं, कितने अमाउंट में डोनेशन कर रहे हैं, कौन डोनेट कर रहा है, द पर्सन हु हैज़ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू डोनेट. फॉर एग्जाम्पल if it is a शूद्रा person, शूद्रा सा क्या है, कंडीशन हैड इम्प्रूव्ड in the kind of Gupta period, ठीक है, and even a little gradually, you know. So what happens is कि what was the position of the person who is donating, ये भी हम help करता है about to know about, not just about to know about the social aspect as well as about the important religious sects and so on of that particular period. Next, it provides it helps us about information regarding iconography, architecture एंड आइडेंटिफाई बेसिकली स्कल्पचर्स, ठीक है, मतलब कि जो हमें दिखता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरियस स्कल्पचर्स, जैसे मैंने बोला ना ये टेम्पल, ठीक है, यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल वी हैव नटराज टेम्पल इन चिदम्बरम, जिसमें भरतनाट्यम के वेरियस पोजेस दिए हुए हैं. उस पोजेस के नीचे क्या है कि उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा पोज है, उसका नाम, उसका नॉट मच अबाउट डिस्क्रिप्शन बट इट हैज़ बीन मेंशन्ड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें किससे मिल रहा है, हमें आर्कियोलॉजी से ही मिल रहा है. एंड ऑल्सो दीज ऑल्सो कंटेन इंस्क्रिप्शंस, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज point number 7, that is they help us to understand history of language and literature, right, and sometimes even performing arts. History of language and literature, what I mean is evolution of language. If you open the book of Upinder Singh, that definitely you must, and as I upload videos you know regarding the summaries, so I would highly entertain कि वो book आप खरीद के रखो, and when I make summary videos and I upload it, you read those, you see the videos, and side by side you also have the book open, right? Okay, so in that book if you open, you will find a proper chart is given, जिसमें ना किस तरीके से लेटर्स इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है. सो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि मे बी जिस तरीके से ब्राह्मी लिखा जा रहा है, जिस तरीके से संस्कृत यूज़ किया रहा है, या फिर जिस तरीके से प्रकृत यूज़ किया जा रहा है अशोका के टाइम पे, ठीक है, क्या उसी प्रकार का प्रकृत जो है बाद के जो प्रकृत इंस्क्रिप्शन है वो यूज़ हो रहा है, या फिर देयर इज सम चेंजेस इन दैट. और मे बी अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है प्रकृत में हैं, लेकिन बाद में इंस्क्रिप्शंस जो है वो आ रहे हैं किसमें, वो आ रहे हैं संस्कृत में. दैट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, right? So it gives us an idea about the kind of changes in the language, the history of language and literature and even performing arts, right? So these are the sources that are being provided by inscriptions, which are also part of archaeology, right? But these inscriptions, they also have some limitations. For example कि information तो वो provide कर ही रहे हैं, बट पूरा इन्फॉर्मेशन वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू देर आर सम इंस्क्रिप्शंस विच वर पब्लिक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मतलब राजा जैसे उस इंस्क्रिप्शन को इशू कर रहे हैं. सो देर हैव बीन फाउंड सम इंस्क्रिप्शंस जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गुर्जरा प्रतिहारा इंस्क्रिप्शन, ठीक है. आई ट्राई कि नेक्स्ट कल परसों में आई अपलोड अ वीडियो जिसमें ना मैं क्रोनोलॉजी के बारे में बताऊँ, जस्ट सो दैट ये जो मैं रेफरेंसेस दे रही हूँ ना अबाउट हु वर गुर्जरा प्रतिहारास एंड मे बी राष्ट्रकूटास, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. सो देयर इज सो मच टू नो, right? So we'll do it step by step. Okay, so when I talk about गुर्जरा प्रतिहारा इंस्क्रिप्शंस, ये लोग क्या है, ये लोग राजपुताना वाला जो एरिया है ना वहाँ पे ये लोग मोस्टली रूल कर रहे थे, एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल कब, हर्षवर्धना के पीरियड के बाद ये लोग ज़्यादातर पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है. और साउथ में डेक्कन में एट दिस पॉइंट स्पेशली महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पे वी हैव द राष्ट्रकूटास हु आर बिकमिंग वेरी पावरफुल. तो ये गुर्जरा प्रतिहारा एक इंस्क्रिप्शन है, वो क्या कर रहा है ना, वो क्लेम कर रहा है कि गुर्जरा प्रतिहारा जो किंग है, हिज नेम इज दिस वत्सराज. दे आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर रूलर he basically defeated the ruler of Karnataka, and he ruled over Karnataka for a long period of time. The Rashtrakuta records, on the other hand, claims that Rashtrakuta king, he defeated Vatsaraj and he ruled over Karnataka during that particular period of time. तो इसमें सेम टाइम पे दो रूलर्स एक जगह पे रूल कर रहे हैं और दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि मैं जीता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. सो इसलिए क्या है ना कि हम इन इंफॉर्मेशंस को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है. लेट अस सी द लिमिटेशंस. समटाइम्स द टेक्स्ट्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस कैन बी ब्रीफ, डेफिनेटली. कि बहुत बार लेट अस अज्यूम कि हमें सील से कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, तो सील से कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो बहुत
छोटा इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बहुत ब्रीफ में होगा। तो हमें क्या है, हमें और भी सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमें लिटरेरी सोर्सेज रेफर करना पड़ेगा ताकि हमें उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में पता चले, या फिर हमें मोर देन वन इंस्क्रिप्शन रेफर करना पड़ेगा टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। दैट इज़ वन लिमिटेशन. So at times they do not present complete historical information. Next is the geographical spread of a king's inscription is generally taken as indicating the area under his political control, as I told you. But what happens is there are certain inscriptions that are also movable. For example, कोई metal plate पे कुछ लिखा हुआ है and or maybe palm leaves पे कुछ लिखा हुआ है, और maybe किसी भी movable rock, for example छोटे से rock के ऊपर लिखा हुआ है जिसको आप उठा के कहीं और भी लेके जा सकते हो. सो इन दैट केस वी कैन नॉट टेक दैट इन्फॉर्मेशन इन फेस वैल्यू. हो सकता है कि वो इंस्क्रिप्शन कहीं और जगह मिल रहा है, वो पत्थर पे जो इंस्क्राइब किया हुआ है छोटे से पत्थर पे, वो हमें कहीं और से मिला है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम को वहाँ पे लेके चला गया, राइट. सो ऑब्वियसली वी नीड अदर सोर्सेज ऑल्सो, लिटरेरी सोर्सेज टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन विद, राइट. Next what happens is, next limitation is, though they provide genealogical information, यानी कि राजा, उसका बेटा, इस तरीके से जेनोलॉजी का इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, बट बहुत बार क्या है, दे माइट इवन बी कन्फ्यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल देर माइट बी टू किंग्स विद द सेम नेम. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें एग्जैक्टली अशोका को अशोका के नाम से बहुत कम रेफर किया गया था. ही वॉज मोस्टली रेफर्ड टू एज देवनम पिय. तो इट वॉज वेरी लेटर दैट वन इंस्क्रिप्शन वी फाउंड आउट जिसमें देवनम पियदासी अशोका लिखा हुआ था, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज़, यू नो. समटाइम्स इट कैन इवन बी कन्फ्यूजिंग. या फिर हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ गुप्ता इंस्क्रिप्शंस हैं जो गुप्ता रूलर्स स्कंद गुप्ता एंड राम गुप्ता, इन दोनों गुप्ता रूलर्स को मेंशन ही नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज ये प्रॉपर जो गुप्ता लाइन है उससे बिलोंग नहीं करते हैं. व्हाट हैपेंस इज कि मे बी यू नो कि ये किसी के बेटे के कज़न, तो इस तरीके से क्या है, तो वो प्रॉपर जो जीनोलॉजी है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनके नाम को एमिट कर दिया गया. तो दिस ऑल्सो हैपन्स, राइट. नेक्स्ट इज एट टाइम्स दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड एग्जैजरेटेड. कॉन्फ्लिक्टिंग का तो मैंने बता दिया अभी शुरू में. एग्जैजरेटेड फॉर एग्जाम्पल कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो राजा को प्रेज करने के लिए लिखा गया. मतलब हो सकता है कि वो राजा ने, लेट अस अज्यूम उस राजा ने 3 राजाओं को हराया, बाकी राजा को हराया, तो वहाँ पे लिखा जाएगा यू नो कि ये जो पर्टिकुलर राजा है उसने 10 राजाओं को हराया, एंड हराने के बाद उसने, अगर उसको वहाँ से 5 किंगडम्स मिला इन रिटर्न फ्रॉम द डिफीटेड किंग्स, तो आप लिखेगा 10 राजाओं को हराया और उससे उसको मे बी बहुत 10 विलेजेस मिल गए, या यू नो, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ एग्जैजरेटिंग. जितना है नहीं उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना. क्यों लिखना? ताकि राजा, बिकॉज अल्टीमेटली द किंग वॉन्ट्स, वाई इज ही राइटिंग दिस इंस्क्रिप्शन. एक राजा एक इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, क्यों? ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स को अपने बारे में, अपने ग्लोरी एंड ग्रेटनेस के बारे में बता सके, या फिर अपने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो लोगों को बता सके, अपने रूल को लेजिटिमाइज कर सके. सो एट टाइम्स जितना है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अच्छा वो लोग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो एंड सच इंस्क्रिप्शंस आर नोन एज प्रशस्तीज. एंड अगेन देर वॉज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली आर प्रशस्तीज. सो प्रशस्तीज आर बेसिकली इंस्क्रिप्शंस इन प्रेज ऑफ किंग्स, ठीक है. नेक्स्ट इज, while inscriptions mention about factual details, some of them might be technical terms. जैसे हो सकता है ना किसी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ किया जिसको उसमें एक्सप्लेन नहीं किया. अब क्या है कि हो सकता है देयर आर सम, फॉर एग्जाम्पल विष्टि कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज विष्टि, तो हमें हेल्प किसका लेना पड़ेगा? लिटरेरी सोर्सेज का, राइट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली इज. सो inscriptions or archaeological sources in themselves are not complete, right? They always need to be, the facts always need to be cross-checked, cross-verified and corroborated with other sources, right? Inscription, okay, and ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो बोल रहे हैं ना कि आर्कोलॉजिकल सोर्स वो लिटरेरी सोर्स से ही कंपेयर करेंगे, हम दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चल रहा है किसी गुप्ता इंस्क्रिप्शन से, so that is also supplemented by numismatic evidence. For example, the largest number of gold coins that have been found. So archaeological source ही दूसरे archaeological source से compare करने के लिए भी use किया जा सकता है, right? Okay. The other limitation is that inscriptions are material remains and they have to be understood in relation to the larger archaeological context in which they are found. So this is kind of a general limitation कि overall if we see कि आर्कोलॉजिकल सोर्स जो लिखा हुआ है, जो इंस्क्रिप्शन ये जो लिखा हुआ है, ये अपने जो उस टाइम का जो पॉलिटिकल कंडीशन था, उस टाइम का जो रिलीजियस एनवायरनमेंट था, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, उसको माइंड में रख के लिखा गया, ठीक है. सो हम आज के अपने परसेप्शन के बेसिस पे उसको जज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हरप्पन सिविलाइजेशन में
बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रीस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो बियर्डेड प्रीस्ट का हमें मिला है. सो कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ बियर्डेड प्रीस्ट, सम पीपल कॉल हिम एज अ प्रीस्ट किंग. सो डांसिंग गर्ल का भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बाथ, फॉर एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन फाउंड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंस्क्रिप्शन, बट वॉट हैपन्स इज कि दे वर रिगार्डिंग, हम उसको अभी अपने परसेप्शन से देख रहे हैं. हो सकता है कि उस टाइम पे प्रीस्ट किंग का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो सकता है कि उस टाइम पे कोई प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट ही ना हो, ये भी हो सकता है ना. सो व्हाट हैपन्स इज कि हम अभी जो उसको देखते हैं वो हम अपने परसेप्शन पे हम इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते. व्हाट वी हैव टू डू इज व्हेन वी एनालाइज द इंस्क्रिप्शंस, we have to keep the larger political, socio and economic aspects of that period in mind, because that is what was there when these inscriptions and archaeological sources were created, right? So this video I'm ending over here. Next video I'm going to make about numismatics and monuments, right? And then we will move on to literary sources, and uske baad I will make a separate video discussing all of these 3 PYQs based on these 2 videos, that is this video and the video that is going to come tomorrow or the day after tomorrow. Okay, so thank you for being along till here. Do subscribe to this channel if you found it helpful, and stay rooted. Okay, and ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, and be humble, and you know, understand this thing कि if you read whatever notes is available in the market and 10 other people are reading the same notes, why exactly should you get 300 plus marks and not other people? तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव दिस नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, बट द थिंग इज यू हैव टू डू ऑल्सो योर ओन दिमाग को यूज़ करना है, अपना वैल्यू एडिशन करना है. उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख लिया और आपका हो गया. यू हैव टू रीड द sources. What I will do is I will make it easy for you to read the sources by and in reference Upinder Singh's book. ठीक है, I will make easy for you to read it. I will tell you what portion is important, what portion is not important, but you have to read. I am suggesting, abhi kya hai, today when I am recording the video, it is I think it is today 27th of August. Okay, so what I will suggest is keep 2 to 3 hours every day for optional preparation, and in that what you do is you see the week, and I am going to upload 3 videos in a week. Okay, so you have 4 days time. In those 4 days, see the videos, go through the sources, download the PDF that I'm going to upload, and you know, add your own perceptions. Add, for example, किसी historian का notes, किसी historian का opinion that you want to add, your own perspective that comes to your mind, add to that. Okay, only then you will get 300 plus marks. If you do what the average person is doing, forget about it. Okay, and people have got 300 plus marks time and again. They have been toppers also, so you can do it too. Okay, so thank you.